अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन बांग्लादेश। इंडिया को ऐसी क्या दिलचस्पी है कि वो बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये वो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। Let's start the video. 3, 2, 1, start. India and Bangladesh have emerged as two of the fastest growing economies around the world. Surprisingly, as contenders in the emerging space, both of them share a special relationship with one another. As neighboring countries, that might be somewhat normal, but these two bilateral relations stand as the world's most exciting story in the emerging nations. In 2021, the two had a total trade estimated to be about 10.7 billion US dollars. This makes the Indian and Bangladesh trade alliance one of the biggest in South Asia. Furthermore, the Indian foreign investments in Bangladesh have risen over the past years, which in 2020 stood at $3 billion. But the two countries are expecting it to grow to a further $9 billion in the future, as Bangladesh emerges as an attractive investment destination. But did it really get here just because the two share the same borders? Or is there more to it? Before we move on, don't forget to leave us a like and subscribe for more. During the independence of Bangladesh, one of the first ever countries to recognize its nation was none other than India, and it did so immediately, even establishing diplomatic relations in 1971. A year later, the two countries' former leaders, Indira Gandhi and Sheikh Mujibur Rahman, signed a 25-year bilateral cooperation, and this would embark the start of their long-lasting economic relationship. Well, it should have, but in 1975, a military coup emerged and destroyed the special relationship. But during the 1990s, trade was already on the rise, averaging around $200 million annually. And it wasn't until 1996 that the two countries' links began to emerge in large numbers, which would continue to do so. Fast forward to 2009, when the current Prime Minister, Sheikh Hasina, came to power. The Indian-Bangladesh relations started to rise at an unprecedented rate, and by 2011, the bilateral would start to grow, month after month, from $286 million in the first month of that year to over $1 billion a month by 2021. During the same time frame, India would help its neighboring nation through a lot of ways, in its military by signing defense agreements and helping Bangladesh open its own military equipment manufacturers. It also enabled India to help Bangladesh's energy sector, exporting electricity every day, and even worked on the Rampal power plant together. Throughout the years, Indian companies would start to invest in the nation of Bangladesh. Some that would embark as the largest investments ever made is from Reliance Power and Adani Group's $9 billion energy investments. This would be a key milestone for Indian companies as it seeks to expand billion-dollar ventures outside the nation, and also show that India is now emerging as a key economic superpower around the world. Today, the Bangladesh-India relationship plays a crucial role in the very social and economic growth of both nations. As years go by, the two nations plan a bigger and more connected nation. According to reports, the two countries' trade is just going to grow and may soon become the largest for each other. The most exciting feat that has emerged in recent times, however, is the line of credit that India offered to Bangladesh. According to the government of India, a line of credit is a form of development assistance, and the amount it gave to Bangladesh so far amounted to over $7.8 billion, which paved the way for over 31 projects to be built. And among the 31, one of them is the Rupur nuclear power plant, a first in the nation and a source of growth. The future of the two nations' relations, according to Narendra Modi, the current president of India, is a golden future. With its trade reaching historic levels, their social and economic integration is more intertwined than ever and is benefiting the millions of lives in the two nations. And we believe that as Bangladesh continues to grow, their technology, their infrastructures, and their people would be as well. This means that the nation will be fully equipped to match the trade needs of India,
It would also open up connectivity to the two nations. A better and faster railway that connects the two nations would increase the relations and trade. Its attractiveness to Indian companies would also in part grow, especially knowing that Bangladesh is a potential information technology hub around the world. And with India, this will make the region stand as the world's tech hub in the future. It is imperative to think that the two nations will play a really big role in the future, and only time will tell whether the two countries really live up to their potential. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने बताया कि इंडिया और बांग्लादेश में जो है वो इंडिया जो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10 बिलियन, मोर देन 10 बिलियन, और 31 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं। ट्रेडिंग जो है उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर में 2 कंपनीज़, अदानी और आई डोंट नो एक स्टील कुछ बताया उन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में दोनों कंट्रीज़ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करेंगी, तो अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी जो है इसी तरह ट्रेड होनी चाहिए, हम चाहते हैं। और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ में। बेशक दोनों अलग अलग हो गए, अलग ही रहे, 2 कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो हम हमेशा बात करते हैं कि जो अब 2 कंट्रीज़ तो हैं लेकिन उनमें रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड, मुझे भी वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है। बांग्लादेश बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और यही वजह है कि जापान जैसी कंट्रीज़ हो गई और दूसरी कंट्रीज़, इंडिया भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अडानी ग्रुप और रिलायंस ने 9 बिलियन US डॉलर उन्होंने बताया और टोटल 10 बिलियन के करीब है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इंडिया को भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसीलिए वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि मिलियंस लोग हैं दोनों साइड पे जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है और लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा कि बांग्लादेश किस तरह से ग्रो हुआ है कि आज इंडिया जैसी कंट्री जो हैं, जो उससे पहले काफ़ी सालों पहले से हैं, वो भी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। नो डाउट बांग्लादेश ने जो प्रोग्रेस दिखाई और जो प्रोग्रेस की है अपने हर सेक्टर में, कि इंडिया जैसी कंट्री, जापान हो गया और इंडिया भी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किसी कंट्री में इतना दम, इतना पावर होगा तो दूसरी कंट्रीज़ इन्वेस्ट करेंगे। तो इट्स वेरी अमेजिंग वीडियो और हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह की वीडियो देख के बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपनी वीडियो भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।